Hi guys, my name is Amitesh Malhotra and I am pursuing BGMC from batch 2021 at BBD University. So मैं जैसे जो फैकल्टीज़ हैं हमारे डिपार्टमेंट की, जैसे अनुभूति मैम, उमा मैम, अर्चना मैम, केतकी मैम, अमिला मैम, आशुतोष सर, आदर्श सर एंड स्पेशली आवर HOD सर, देसी विक्रम सर, सब के सब बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत ही मतलब डिपार्टमेंट में, स्टूडियो में हम लोग की रोज़ की मेमोरी, हम लोग कैसे भी, कोई स्टार नाइट हो गया, डीजे नाइट हो गया, अखिल ज्योत हो गया या गणेश महोत्सव हो गया, सबकी हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते थे डिपार्टमेंट में। एट द लास्ट मैं यही बोलूँगा कि अगर आगे कोई फ्यूचर में कोई स्टूडेंट मास कॉम लेना चाहता है या BGMC डिपार्टमेंट में आना चाहता है, भाई बहुत सपोर्टिव डिपार्टमेंट है, बहुत सपोर्टिव फैकल्टी है। And I'm a student of mass communication from BBD University and हाँ हमारा ईयर है 2022 to 2025। सो अगर हम बात करें BBD यूनिवर्सिटी की, हमारे डिपार्टमेंट की, सो यहाँ पे टीचर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं एंड हमारे HOD काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एंड एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बाकी डिपार्टमेंट से इसलिए बेहतर है एक तरीके से, क्योंकि हमारे में प्रैक्टिकल काम बहुत ज़्यादा होता है। हमारे टीचर्स हमेशा हम लोग को मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिकल के लिए हमेशा एक बढ़ावा देते हैं कि आप प्रैक्टिकल के लिए काम करिए, प्रैक्टिकली आप जाइए, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, सीखिए। सो या दैट्स हाउ हमारा जो है डिपार्टमेंट काफ़ी बेहतर है। हेलो, माय नेम इज़ गौरांशी एंड मैं BBD यूनिवर्सिटी में BAJMC बैच 2022-25 की स्टूडेंट हूँ। हमारी डिपार्टमेंट और हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सपोर्टिव है हमारे पूरे कोर्स और करिकुलम को लेकर के। इसे पूरी तरह से हमें क्रिएटिव फ्रीडम मिली है कि हम अपनी तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें, और थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे भी ध्यान दिया जाता है कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फील्ड में जाके काम करना ईजी होगा और आउट द वर्ल्ड में ईजी होगा। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है। Hello everyone, my name is Diksha Bhadoria and I am pursuing BJMC from BBD University, batch 2022 to 25, and I am very thankful to BBD University क्योंकि यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और हमारा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा इसीलिए है क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम के साथ दी जाती है और बहुत सपोर्ट किया जाता है कि हम जितना थ्योरी सीखें उतना ही अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दें। Hello everyone, my name is Ada Aziz and I'm currently pursuing BA JMC from BBD University, Lucknow. I've chosen BBD University because of its innovative infrastructure and high placement rates. The faculty members here are very supportive and very kind. They are always ready to help us and are very understanding. We have regular mentor and mentee meetings where they solve all our queries. The college life here is also very amazing. 2, 1, go. Hi, I'm Andileep Rizvi and I'm pursuing BJMC batch 2021 from BBD University, Lucknow. As a final year student, I can attest that the knowledge and experiences I have gained from here are invaluable. The faculty of our department is amazing. In this 3 years of journey, I have learned about report writing, article writing, journalistic ethics, field reporting, videography, photography, editing, and all these things have made me prepared for my future. And we have a studio also in our department, and under the guidance of our faculty members and our HOD, we have also initiated a podcast by the name BBD Beyond Books. So with all these learnings and challenges, I can say that now I am ready for my future challenges. From Mass Comm department, I am pursuing Bachelor's in Journalism and Mass Communication from BBD University. I would like to say that it has been wonderful experience being a student of BBD University, as it provides platforms where we can showcase our skills. Faculty provide us friendly environment. BBD believes in a motto that learning has no end, and that is what they always try to project. They provide us best opportunity. The only thing that I would like to say, prove yourself and try to find best placement in this university. Hey, my name is Dimple Thawani and I'm a graphic and UI designer at Xenon Media. I'm pursuing mass communication and journalism from BPT University, and I enrolled in here in batch 2022, and I am in second year right now. And I must say this course is really helped me a lot.
and we have all the advanced facilities like advanced media lab and all the equipments which are needed for this course. The professor are in here is very supportive, and I would like to say thank you to entire BBD University and my professor for being part of my journey. Thank you. Hi, my name is Malik. I am a third year student of Bachelor's of Mass Communication and Journalism at BBD University. I enrolled here back in 2021, and I have to say, I've learned a lot here. The professors are very learned and highly supportive. I am a UI UX designer as well as a graphics designer at multiple places. I do multiple internships and also have a full-time job thanks to this university. The professors and my classmates have been amazing. I would like to thank the social society BBD Beyond Books for teaching me how to edit videos as well. Thank you so much BBD University and to all my friends and to all the cultural societies here. Hi, I'm Prerna Maurya, currently pursuing BJMC. Studying journalism and mass communication at Babu Banarsidass University has been an enriching experience with a great infrastructure. The curriculum, coupled with passionate and the knowledgeable teachers, have provided me invaluable skills and insights into the ever-evolving media landscape. Their dedication to nurturing critical thinking and creativity have prepared me well for a career in the field. Thank you. हेलो, मेरा नाम फराज हसीब खान है और मैं बीबीडी DUMC से साल 2023 बैच का पास आउट हूँ। मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि DUMC BBD का इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है मेरे ख्याल से जहाँ का फैकल्टी और जहाँ के HOD इतने सपोर्टिव हैं कि आपको नहीं लगता कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैं हमारे HOD डॉक्टर JC विक्रम सर का आज भी धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम लोगों को ऐसी स्किल्स सिखाई ताकि हम बाहर जाकर दूसरे बच्चों से कम्पीट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे फैकल्टीज़ भी काफ़ी सपोर्टिव थे जो आज भी हैं, आज भी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी DUMC इज़ द बेस्ट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू। Greetings, I am Vidushi from Bachelor's of Mass Communication, batch 2021 to 2024. To say my experience in BBD University's Department of Mass Communication has been enthralling would be an understatement. With the commendable efforts of the teachers as well as them acting as our guiding angels and paving the stepping stones for our experience in this field would be an understatement. They have been supportive, great, friendly, everything that a college student would require. The Department of Mass Communication has also given me the opportunity to get the on-field experience through various events, providing us the right gears and even the studio assignments that have allowed us to step out in the real world with the right knowledge as well as the right experience. Hello everyone, my name is Devansh Sharma. Currently I am doing my journalism and mass communication at Babu Banarsidass University, Lucknow. Alongside my studies, I am also a grade B employee at Government of India. I want to express my sincere gratitude to our HOD sir as well as all faculty members for providing me such an excellent opportunity in the field of public relation and mass media. I want to recommend everyone to join our university, especially mass communication department, to get the knowledge of mass media and public relation. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। ये बोलने का कॉन्फिडेंस मुझे तब आया जब मैंने मीडिया की फील्ड को एक्सप्लोर किया और मैंने अपने करियर की जो शुरुआत की वो 2018 से की थी, जब मैंने BBD यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। और जब मैंने एडमिशन लिया तब मुझे ये नहीं पता था कि इस फील्ड में और क्या क्या होता है, लेकिन जब मैंने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया तब मुझे चीज़ें पता चली और मैंने अपना एक गोल सेट किया और उस गोल के लिए मैं आगे बढ़ती गई और आज मैं NDTV इंडिया में एज अ सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूँ। एट द एंड में बस ये आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप अपने करियर की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। बस अपनी फैकल्टीज़ को, HODs को थैंक यू करना चाहूँगी और अपने फैकल्टीज़ की मुझे एक बात हमेशा याद रहती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि जो भी करना है मुझे वो खुद के दम पर करना है, क्योंकि खुद पे दम पर रचा हुआ इतिहास दुनिया याद रखती है। थैंक यू। माय नेम इज़ आंचल सिंह और मैं अभी एज अ कॉपी एडिटर नेटवर्क 18 ग्रुप के साथ हूँ। मैंने अपना मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स BBD यूनिवर्सिटी से किया था और मैं 2022 में पास आउट हूँ। मेरी प्लेसमेंट भी BBD यूनिवर्सिटी से हुई है, तो इसके लिए मैं अपने पूरे BBD ग्रुप, मैं अपने प्रोफेसर्स
की टीम और मेरे एचओडी सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरी बहुत लर्निंग स्टेज थी। और मैंने बीबीडी यूनिवर्सिटी से बहुत सारी चीज़ें सीखी और अपने आप पे विश्वास रखा, क्योंकि अगर आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल रहा है, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे ये सारी चीज़ें बीबीडी यूनिवर्सिटी से स्टार्टिंग टाइम से ही मिली हैं। और हाँ, बिलीव योर सेल्फ, और आप अपनी एक्टिविटीज़ को आप अपने अंदर तराशिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी आप अपने प्रोफेसर्स पे छोड़ दीजिए, वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। और इसके लिए, मेरे प्लेसमेंट के लिए, मैं अपने एचओडी सर को, अपने प्रोफेसर्स की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आज उनकी वजह से मेरी स्टार्टिंग एक इतने बड़े मीडिया इंडस्ट्री ग्रुप के साथ हुई है। और मैं आगे भी बहुत अच्छा करूँगी और बीबीडी का नाम रोशन करूँगी। थैंक यू सो मच बीबीडी ग्रुप, थैंक यू। Hello everyone, I am Dania Mehdi from BA JMC final year. Today, as I bid farewell from BBD University, my heart is filled with immense gratitude and lots of emotions. While memories may blur, what remains crystal clear is the unwavering support and care from our faculty. Be it our respected HOD sir or a beautiful class coordinator Anubhuti ma'am, Archana ma'am from whom I've learned a lot about radio, Amila ma'am, Uma ma'am, Ketki ma'am from whom I've learned many things. I really want to thank every one of them. Because of them, I've not only grown academically but also as a person. At DOMC, Department of Mass Communication, every day was an adventure filled with laughters and learnings. And to be very honest, something I will really miss is our 6th floor. The classroom, the corridor, the window near the corridor, everything is memorable for me. At last, thank you BBT for everything, for all the laughters, the memories, the learnings you provided us as students, the friendships I got from BBD. You will always hold a special place in my heart. So thank you. Hello everyone, my name is Ayushi Sinha and currently I'm working as a freelance graphic designer for advertising agencies and brands. I've done my bachelor's in journalism and mass communication from Babu Banarsi Das University, Lucknow in the batch of 2020 to 2023. I'm blessed to be a part of the mass communication department of the university, having such brilliant and supportive professors. As our classes began in the COVID period and for almost 1 year our learning was in online mode, but due to our professors it didn't get affected that much. I was into art and design from my childhood, but getting into that professionally is only because of my college and my professors. And I think I have justified only some % of my learning from them, and there is so much more to do in the future. And in the last, I would like to thank my university, my department, my HOD and all my professors for being the guiding light in my career and my life. Thank you. Hello everyone, I am Utsav Kapoor. I am currently working in the Apollo Hospitals in the branding department. I did my journalism and mass communication from BBD University in the year 2016. I am highly grateful and thankful to Dr. J.C. Vikram sir, Amila ma'am, Ketki ma'am and all other faculties. They helped me a lot during my graduation and beyond. Thank you. Hi, my name is Avnish Suryavansh. I did my graduation in mass communication from Babu Banarsi Das University from 2020 to 2023, and currently I'm working on a US-based 2D animation project along with my team and social media marketing. The department helped me a lot in carving my skills, and the press conferences we had, the debates we had, the participations we did in inter-college competition, those things helped me a lot in carving my talent. I'd like to thank my department for what we are today. Thank you. Hello everyone, myself Sarthak Tripathi and I have completed my graduation from BBD University in 2023 in Journalism and Mass Communication program. Studying at BBD University in Lucknow has been an enriching and transformative journey for me. As a graduate of Journalism and Mass Communication program, I can confidently say that my time at BBD has equipped me with the skills, knowledge and confidence to thrive in the dynamic field of media. The faculty in BBD University are not just educators
but mentors who are deeply involved in the success of their students. I am grateful to BBD University for providing me the values of integrity, ethics. A good education can change anyone. A good faculty can change everything. Hello everyone, this is me Akanksha. I feel fortunate that I have chosen journalism and mass communication at BBD University, Lucknow. In university, every day we learn new things and practical approach. I really like the infrastructure and the way faculty treated me. All faculty members are so caring and supporting. They are mentoring me like their own kids. College offers me various opportunities to interact with famous media personalities and celebrities. It's been an amazing journey for me. I feel extremely lucky to be a part of this university. Hello everyone, myself Niharika Srivastav. I was a student of journalism and mass communication, and I got my bachelor's degree in journalism and mass communication from BBD University, that is in Lucknow. And currently I'm in Times Now as a senior executive, though before it I worked in Z, ABP, Niti Aayog and many more, because it's a long, lengthy journey. But I feel privileged that I got my bachelor's degree from BBD University, because it's a college that gives you all facilities and help you out in each up and downs of your life. And especially the staff, like the teachers, Ketki ma'am, Amila ma'am, Pranjali man, every ma'am and every sir obviously helped me and other kids too to how to write article with truthfulness, integrity and sovereignty, and obviously to go through all the field experience you want to, the internships and everything you once need to get a better field experience. So it's a delightful time for me. The 3 years, it's a big, great and happyful journey for me, and obviously it helped me out to get what I am currently doing, pursuing my dream, achieving my passion and just working hard to get more out of it, and obviously loving my parents with that. And it's a thing I can say that every student should do what they want to, but with all the work, with integrity and full faith that they can achieve it. And obviously from BBD University, if you are getting any kind of a degree, it's a big thing for you. So better do best and do great. Thank you. नमस्कार, मैं अब्दुल प्रताप सिंह। मैं इस समय ABP न्यूज़ में एज अ सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मैंने जब 2017 बैच में BBD से मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया था। BBD यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट के टीचर्स बहुत अनुभवी हैं, उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, वो मीडिया फील्ड में अच्छी जानकारी देते हैं। आज मैं इस जगह पर बैठा हूँ, ABP न्यूज़ में काम कर रहा हूँ, उसका पूरा श्रेय BBD यूनिवर्सिटी, मेरे टीचर्स, मेरी फैकल्टीज़ को जाता है। मास कॉम डिपार्टमेंट के HOD JC विक्रम सर, केतकी मैम, अमिला मैम, इन सब का भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा